discuss the further part, that is second type of simple harmonic motion, which is angular SHM. It is point 5.13 on page 125 from the book. So I appeal everyone to get open page 125, article 5.13. So it is again SHM, only the path followed by the particle instead linear will be a curved path. So angular SHM is a periodic motion in which path followed by the particle is curved in nature. It has the same characteristics as that of linear SHM. So in linear SHM, force governs the motion because motion is along straight line. In angular SHM, the motion is governed by torque, and this torque is called restoring torque. The torque at the given time is proportional to angular displacement at that time. So this is torque. So torque is proportional to angular displacement, and being restored, it is opposite to direction of angular displacement. So we can write restoring torque proportional to minus angular displacement. This condition is satisfied in angular SHM. So motion is governed by torque, and torque is proportional to angular displacement and always directed opposite to it, means towards the mean position. So these are its characteristics. We will proceed further to find its differential equation. The best example is angular SHM is the motion of body when kept in magnetic field. Suppose I have one magnet freely suspended, a bar magnet. When it is kept on the tabletop, it gets aligned with its axis in magnetic meridian, that is in north-south direction. It will be its equilibrium position. To set this magnet in angular SHM, what we have to do? We have to rotate it so that it partly will start its rotational motion. Partly rotational motion set करनी है. It will rotate about the axis of rotation perpendicular to its plane and passing through its center. You displace it through certain angle theta. Don't release it. So this will be its new position, displaced position. So if the displacement is anti-clockwise, the restoring torque produced will be towards the equilibrium position, that is clockwise. So when displacement is anti-clockwise, the torque is clockwise. Similarly, when you release it, it will come to mean position, will cross the mean position and will take the new position on the opposite side. So this displacement now will be anti-clockwise, but restoring torque will act towards mean position so that the equilibrium of the system is maintained. So magnet is not displaced linearly, it is fixed at one position. Only it is provided a rotational motion, not fully but partly, so that it will move clock, anti-clock, anti-clock about its mean position without changing its own position. It starts rotating about the axis of rotation. So this is the best example of angular SHM.
So in angular SHM, torque produced is restoring type and has direction always opposite to direction of angular displacement. So we can write torque proportional to minus theta. Proportionality sign, if you try to omit, you can write it as minus c theta, where c is constant of proportionality. C can be defined torque by theta. So C is restoring torque per displacement. So if theta is unit, C is restoring torque. So C, constant of proportionality, is restoring torque per unit displacement. So this is equation 1. When the body, any body, not only the magnet, I have given one of these examples of angular SHM. So for body in angular SHM, it is partly rotated and hence you can define torque in terms of its moment of inertia. Due to this theta, velocity will change. Velocity change होने के वजह से उसको angular acceleration मिलेगा. So if I is moment of inertia of a given body about given axis of rotation, alpha is angular acceleration produced. You can rewrite tau as I alpha. This is equation 2. When compare these two, I could write I alpha as minus c theta. Rearranging, angular acceleration is double derivative of angular displacement with respect to time. So I d2 theta by dt square plus c theta is equal to 0. So this is its differential equation. ये हम लोगों को differential equation मिल जाता है. Since angular SHM is equivalent to linear SHM, it will be also periodic. So using this, you can define time period of angular acceleration SHM, which is its general expression. तो general expression क्या हो जाएगा? T is equal to 2 pi upon omega is equal to 2 pi divided by ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं? C by I will be ओमेगा स्क्वायर. ऐसे करके भी हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं. Rearranging terms, we can write d2 theta by dt square plus omega square theta is equal to 0. Omega will be square root C by I. So it will be omega square, and this omega square then we can write 2 pi upon square root C by I. ये C by I ले सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू. So you can write it as 2 pi into square root I divided by C. So this gives you general expression for time period in angular SHM, 2 pi square root I by C. हाँ, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमाइंड वेल. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. So this is the theory behind angular SHM. We will proceed further to study its application. 1 minute. So while studying its application, the best example illustration we will choose that of the motion of magnet kept in uniform magnetic field. Suppose as shown in book in figure 5.12, uniform magnetic field is directed towards north. It is uniform, so it should be represented with the set of parallel straight lines equidistant from each other. So this is B. This is uniform magnetic field. Uniform direction and magnitude everywhere in the given region should be same. And in such uniform magnetic field, we have to place magnet. So when you place magnet freely suspended, एक thread है और ये thread में हम लोगों ने magnet tie किया हुआ है. So it will in its equilibrium position, it will get aligned with its axis in the direction of applied magnetic field. So we will consider one magnet whose magnetic moment is mu.
हम लोग म्यू सिंबल यूज करेंगे, सो गलती नहीं होगी. We will assume its length to be 2L, kept in uniform magnetic field of induction B. In equilibrium position, it will be in position A dash B dash. Try to displace it through certain angle theta. So let the displacement to be clockwise. Clockwise rotate करते हैं. So it will get new position. So A double dash B double dash will be its new position when displaced through angle theta, assuming in clockwise direction. So in this displaced position, you have to hold it with the hand. We are not released. And when displaced, restoring forces automatically get set up. They do not play, they do not come into play actually, but they get developed. And when you release it, that restoring forces come into play and try to bring this magnet again towards mean position. So restoring torque is clockwise if the displacement is anti-clockwise. So you can define torque produced using mathematical equation. So if theta is very small, by definition of torque, you can write torque as, आप लोगों ने लास्ट टाइम मैग्नेटिज्म में टॉर्क ऑन मैग्नेट स्टडी किया था. एक्सप्रेशन मालूम है आपको सबको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन और रेशो ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ m एंड डायरेक्शन ऑफ b. ये जनरल एक्सप्रेशन है टॉर्क का. So you can use over here. So mu b sin of theta. थीटा टॉर्क अपोजिट है, इसलिए हम लोग उधर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे. सो टो इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा. बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा विल बी ओनली थीटा. सो टॉर्क विल बी देन म्यू बी थीटा. Neglecting the directions in magnitude, tau is equal to mu b theta. Minus sign लेनी ही है because both are opposite and we are using vector notation. So you can define this as well. So using this, we can rearrange the terms and set the equation. Torque है, ये स्ट्रिंग के आजू बाजू वो ऐसा स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इसका एक्सिस है. अभी इक्विलिब्रियम में है, मैंने डिस्टर्ब किया, तो अबाउट द स्ट्रिंग एज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इट विल परफॉर्म एंगुलर एसएचएम. इट विल नॉट गेट डिस्प्लेस. वो डिस्प्लेस नहीं होता है, एक ही जगह रुकता है, और गिवन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग पार्टली. दिस इज एंगुलर एसएचएम. सो इन टर्म्स ऑफ angular acceleration produced, we can define tau as I alpha, where I is its moment of inertia about given axis of rotation. Equating these two, I could write I alpha as minus mu b theta. We are interested to finding its periodic time. So इसमें क्या होता है, dipole moment does not change, b is also constant, so I is also constant. So with I mu b constant, I could write alpha proportional to minus of theta. That is, acceleration produced is proportional to angular displacement and it is always directed opposite to angular displacement, which proves the motion of magnet is angular SHM. So this is its proof. Once you prove the motion to be angular SHM, you can find expression for periodic time of the magnet. General expression क्या था? 2 pi upon square root of angular displacement per unit displacement. ये उसका जनरल फॉर्मेट है. तो you try to get the value of theta upon alpha by theta. कौन सा एक्सप्रेशन हमको मिला है?
I alpha mu b theta. Only considering the magnitude. So alpha by theta will be mu b divided by moment of inertia I. When you substitute the value over here, we can define period of magnet. So it will be then square root mu b upon I. Rearranging the terms, we can get derivation the time period t of magnet vibrating in uniform magnetic field 2 pi square root I divided by mu times b, where mu is its magnetic dipole moment and b is strength of magnetic field in which it is vibrating, having moment of inertia I about the given axis of rotation. So this is the expression for magnet vibrating in uniform magnetic field. So we today discussed what is angular SHM. We derived its differential equation. We derived general expression for periodic time in angular SHM in terms of constant C. जो मैंने C लिखा था ना, उसके हिसाब से हम लोगों ने एज्यूम किया it is RC divided by I. Then we proceeded further to study its one of the applications, motion of magnet in uniform magnetic field. We proved motion of magnet to be angular SHM and we derived expression for its periodic time. This occurs for 4 mark. 4 mark के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं. Define angular SHM, derive general expression for periodic time in angular SHM, derive its differential equation, show that motion of magnet in external uniform magnetic field to be angular SHM, hence derive the expression for its periodic time. Such questions, a short bit questions and a long question, can be said on angular SHM. So we'll proceed further to solve few numerics based on the same formulae from the exercise. Exercise के दो numerics they have given solved on page number 126. Page number 126 देखो, उसमें examples 5.12 and 5.13 they have given solved. Only I will give you the hints. When you talk about time period, you have to familiar with moment of inertia. Moment of inertia I की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है. So उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को. So ये दोनों एग्जाम न्यूमेरिक्स एकदम इजी है. आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी. So I am interested to solve numerics 21 and 22 from our exercise. अपने exercise निकालो on page 130 निकालो page number, and on that page number they have given numerics based on angular SHM. So we'll proceed further to solve that numerics. Time to time I have considered numerics also of chapter SHM. तो हम लोग पहले 21 और 22 वाले जो न्यूमेरिक्स है वो सॉल्व करते हैं. So based on the motion of magnet, the numeric 22 is set. So first we will solve numeric 22 from the exercise. क्या दिया है देखो, find the number of oscillations performed per minute. पर मिनट पूछा है, पर सेकंड नहीं पूछा है. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम दैट इज पर सेकंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने नहीं पूछी है, उन लोगों ने एक मिनट में कितनी ऑसिलेशंस होगी वो पूछा है. वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट भी दी हुई है. वो सब दिया हुआ है, खाली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज. क्या है देखो, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम. अभी हम लोगों ने डिड्यूस किया 2 पाई स्क्वायर रूट I अपॉन म्यू बी.
We know time period is nothing but 1 upon frequency. So you can replace it by f also. You can use word n or f. So f will be then 1 upon t. Isn't it? So we can relate this f. So f निकालना है ना, frequency निकालनी है, directly frequency नहीं पूछी है. They have asked you to find number of oscillations in 1 minute. By using this formula, let us find first number of oscillation in 1 minute per unit time, that is in 1 second. So you first find its frequency. By using frequency, you can find number of oscillations in 1 minute. Simply multiply it by 60. So using this formula, we can write f as 1 upon 2 pi 1 upon t square mu b divided by r. This will be frequency. Frequency number of oscillations in unit time, that is in 1 second. So divide this, multiply this f by 60 seconds. You will get time required time जो है ना number of oscillations वो मिल जाते हैं. So this will be then number of oscillations in 1 minute. तो डायरेक्टली f निकालने के बाद आप लोगों को 60 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में आप लोगों का लास्ट आंसर आएगा. सो दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट. अभी चालू करते हैं. 60 इन अपॉन 2 पाई जो दिए हुए हैं, स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यूज. क्या क्या दिया है देखो बच्चों, क्या क्या दिया है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. डायपोल मोमेंट दी हुई है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो इट इज ऑलरेडी इन SI यूनिट, नो नीड टू कन्वर्ट. देन दिया है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दिया हुआ है वेबर पर स्क्वायर मीटर में, वो भी SI में है. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं into 10 raised to कुछ -5. So 1.6 10 raised to -5 divided by this I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो डायरेक्टली दिया है या नहीं दिया है, दिया है, डायरेक्टली दिया है kg per meter square. So it is 3 into 10 raised to -6. Actually kg per meter square गलत है, kg मीटर स्क्वायर चाहिए था because मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो उधर मिसप्रिंट हो गई है, उधर kg मीटर स्क्वायर चाहिए था. So using this you can proceed further and can find the last value. When you solve it, देखो वो 60/2 पाई वैसे ही रखते हैं. सॉल्व करो, ये 3 कैंसिल हो जाएगा. 1.6 I could write as 16 into 10 raised to -1. -1 -5 will become -6 upon 10 raised to -6. ये रीअरेंज किया मैंने. 1.6 is 1.6 16 into 10 raised to -1. 1 डेसिमल टू द राइट गया तो पावर नेगेटिव आ गई, 1 प्लस गया इसलिए पावर 1 आ गई. सो 10 raised to -1. So 1.6 is 16 10 raised to -1. -1 -6 5 कितने हो गए, 6 हो गए. Square root of 16 will be 4. So it will be 60 into 4 upon 2 pi. When you solve it further, 2 to the 4, 6 to the 120 by pi, and pi is 3.14. So using some log यूज करते हैं. चलो हम लोग लेते हैं नियरली 3 लेके देखते हैं क्या होता है. कितना आएगा, 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट. 1 मिनट में मैं बोल रही हूं, इट इज 40 डिवाइडेड बाय 3 है, 3 से पाई ज्यादा है तो योर लास्ट आंसर विल बी लेस देन 40. So it is performing 40 nearly 40 oscillations. Exact value 3.1 है ना, तो 38 point something आ जाएगी if you use log tables. So this will be less than 40 because denominator is greater than 3. If you take 3, it will be 40.
So it will perform 38 point something oscillations in 1 minute. Only be careful. Using frequency is oscillation in unit time, that is in 1 second. They have asked you for 1 minute. So frequency निकालने के बाद number of seconds 1 minute में जितने हैं उससे हम लोगों को लास्ट आंसर को मल्टीप्लाई करना है. So don't get jumble. You have to take 60 factor while solving the numeric to find number of oscillations in 1 minute. So this is your last answer. What is the unit of last answer? Number of oscillations doesn't have any unit. It is a pure number. So 38.9 something oscillations per minute will be your last answer. We will proceed further for numeric 21. अभी मैंने 21 न्यूमरिक चालू किया. 21 न्यूमरिक में देखो क्या क्या दिया है. Accordingly we will solve it. 20 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर डिस्क गिवन मास दिया हुआ है. उसका डायमीटर वाइड मीन्स यानी व्हाट, इट्स डायमीटर. वाइड है ना, डिस्क है ना, तो डिस्क का वाइडनेस दिया है यानी कि उसका उन लोगों ने डायमीटर दिया है. सो रेडियस कितनी आ जाएगी अपने आप 10 सेंटीमीटर. जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है. सो गिवन इज डायमीटर, यू शुड कैलकुलेट इट्स रेडियस. मास भी दिया है, कितना है 200 ग्राम. सो मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क is 200 gram and its radius is 10 centimeter. It is suspended using a string. ऐसी string suspend की है. तो ये string उसका axis of rotation हो गया. Axis of rotation हो गया उसका. Now what we have to do? Suppose this is the disc. You have to move it. Release through certain angle. अभी मैंने angular displacement कैसी की, clockwise. You should not shift it. Just give it a rotation. Rotation देना है. तो restoring torque क्या हो जाएगा? Towards the equilibrium position. So anti-clockwise. So here also it is the sum based on angular SHM. कितने डिग्री उन लोगों ने किया है? देखो ट्विस्टिंग थ्रू 60 डिग्री. ये मैंने क्लॉकवाइज सपोज एंटी क्लॉकवाइज किया 60 डिग्री. न्यू पोजीशन विल बी दिस. सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा इज 60 डिग्री. 60 डिग्री उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. Now what they have given, it performs oscillation with period of 1 second. So time period दिया हुआ है capital T is equal to 1 sec. ऐसे ये भी दिया हुआ है. Calculate maximum restoring force generated. वो टो की वैल्यू उन लोगों ने पूछी है. So what is tau? With the help of time period you have to proceed further to find the value of tau. Tau की वैल्यू निकालनी है. So what is tau? Tau कैसे assume करेंगे? In terms of angular displacement. क्या किया हम लोगों ने? Tau is equal to c theta. जो basic equation है ना, without any sign I have taken c theta where c is constant of proportionality. And what is c in terms of t? t की जनरल एक्सप्रेशन क्या है? 2 पाई स्क्वायर रूट. हम लोगों ने पहले डिड्यूस की है ना, वो क्या बोली थी मैंने? व्हाट इज c? हम लोगों ने क्या कितना लिया था? I dt 2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस c थीटा इज इक्वल टू 0 लिया था. सो टो कितना आ गया था हम लोगों का? 2 पाई स्क्वायर रूट c बाय I by c. ये वैल्यू मिल गई थी. सो c इज गिवन. सो यू हैव टू फाइंड c. लास्ट एक्सप्रेशन कौन सा यूज करेंगे? टो इज इक्वल टू c थीटा. थीटा इज गिवन इन डिग्रीज. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस. रेडियंस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग थीटा की वैल्यू यूज कर पाएंगे. सो व्हाट इज थीटा?
60 डिग्री मन से कितना रेडियंस आएगा, पाई बाय 3 रेडियंस आएगा. On using this, you have to rearrange for C. Squaring on both sides, you will get C. C लेफ्ट में लिया, स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर आएगा, ये t इधर आएगा, so t स्क्वायर into I. This is the expression for C in terms of periodic time. देखो t square is equal to 4 pi square I by C. So C will be लेफ्ट साइड में लिया तो 4 pi square upon t square into I. So tau will be then 4 pi square upon t square into I into theta. ये तुम्हारा टोटल इक्वेशन हो गया. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क above transverse axis, that is perpendicular to its plane and passing through the center. What is its value? We have learned in first chapter. It is half m r square. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैं वाइंड अप कर रही हूँ 1-2 मिनट. So I could write this tau as 4 pi square upon t square into half m r square into theta. ये आप लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है. So using expression for periodic time, rearrange it to get the value of C and tau is equal to C theta. Only before substitution, theta should be expressed in radians. Remember all these things well. So 4 pi square upon t square, I of circular disc about transverse axis. Transverse means perpendicular to plane and passing through center is half m omega square. So m in किलोग्राम नहीं लेना है, ग्राम दिया हुआ है. तो when substituting the value of m, you have to multiply it with 10 raised to minus 3. रेडियस 20 नहीं लेनी है, 10 लेनी है. So रेडियस भी सेंटीमीटर में है, तो you have to convert it in meter and then you have to take its square. So ये फैक्टर का भी स्क्वायर आ जाएगा. So substituting these values, conclude the answer with theta is equal to pi by 3 and solve the numeric. You will get the last answer.